India is the India Federation Chief, Mr. Manjeet Singh Gill is here to my left. Dr. Gurmeet Singh, he owns the Bella Money Group. He also is an owner of the team. To my right, we have the organizers who have structured this league to come into existence. And I'll be switching between English and Hindi, so I'm sure it will be comfortable for both of you. That is my original assignment in politics, so I can do it very well. I hope all of you understand what I say when I say that. So this, I have been put as a chair here because basically I have been conducting a lot of exercise on hunger-free India earlier. But to talk about hunger in India, we have shifted from hunger to nutrition, and that is the small difference. It's not a small difference, it's a very big difference. And ever since free food to 100 crore people has been given, the question of hunger does not exist. But there is of course a significant aspect to world hunger. And the chefs and the restaurant cricket league, which is a part of hunger and culinary displays and support, we try to combine both of it to have a very futuristic approach to a cricket league. The league is not in competition with any other leagues, but when we talk about this as an institution, you would barely come across an individual who has been born, who has not moved out from his home and gone for the culinary treat. And whatever we have in India, with about 550,000 food service businesses, and Maharashtra is called Modak Manchas, Uttar Pradesh is called Kachori Cakes, Rajasthan is called Dal Bhati Devils, and Uttarakhand is called Gultia. I really do not know the meaning of some of them, like Modak and Gultia, I would not know. It's a sweet, sorry, I'm just going through it. And of course, for Bihar, there must be some Litti Chokha outside of it. So I don't know whether, I don't see it there, but we'll have it in some course of time. So this is a brief introduction. And I would request the CEO, Abhishek, to give a brief on the subject. So welcome all of you. And I think I've done the introductory part to launch RCL 2025. For years to come, there will be a lot of growth. We have already had a lot of interest by people across the country, big chains, and of course, with the visibility, what it is getting today in the field of cricket, with the subject of hunger-free India, the skilling aspect of millions who want to be great, millions who want to become a chef, who want to have a means of becoming a chef. In English, we call them a chef. In Hindi, not the right way to put it, but they are small-time halwais. But a better way is when we talk about continental dishes, when we talk about culinary, we talk about pastries, and so forth and so on. It's a different vocabulary, but end of the day, it is taste bud, hunger, and everyone needs it, and an appetite for games. So that is the beginning of today's press conference. Abhishek will carry forward. Thank you. Thank you, sir. Charity matches. We are honored that the charity matches would feature celebrity chefs, social influencers, and other distribution bodies who would play these charity matches. From the next day onwards, from 18th to 20th, we have the league matches, which are 12 league matches. Entertainment partners, Radio Mirchi and Dhamma. We have mission partners, 5 mission partners, which are the NGOs. We have 14 media partners,
We have an academic mission partner. We have a social impact partner, which is Adigol Foundation. So we have around 17 youth ambassadors, 17 social impact ambassadors, celebrity chefs, former Olympian. The conference is now open to question and answers. We'd like, please go ahead. If someone, आप लोग फिर से repeat करें। 10 रन पे 10 100 जरूरतमंदों को खाना मिले, खाना। जी। ये क्या है? विमर्श के आलोक में ऐसा है कि ये एक नोशनल ये नहीं कि गिनती करेंगे और भूल पाएंगे। कहने का है कि जहाँ जरूरतमंद इस प्रकार के होंगे उनको आरसीएम की तरफ से, चाहे वो एनजीओ हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, और आने वाले दिनों में उसको इस तरह से ये नोशनल एक सिंबल है, इसका कोई काउंटिंग से नहीं है, ऑडिटिंग वाला नहीं है, ये नोशनल है जिसको हम लोग उसको लेते हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या दिखती है जिसकी संभावनाएं बहुत कम है उन्हें, और ये हमें हमेशा सोचना होगा कि वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम हंगर to nutrition. Now what we are discussing mostly is nutrition rather than hunger. Because we don't talk in terms of hunger these days. सर ये कितने ओवर का मैच होगा और क्या इसमें कुछ नॉर्म बीसीसीआई टॉप के कुछ रखे हैं इस तरीके से कुछ लीग का मैच करना कोई आता है? ऐसे बेसिकली मैं आप मुझे लग रहा है कि सारे इस कॉन्सेप्ट को क्रिकेट के रूप में देख रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसको मैक्रो में देखें। तो क्या है कि क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ दिस होल इनिशिएटिव। डोंट टेक इट सीरियसली। क्योंकि ये है क्रिकेट हैज बीन यूज्ड एज अ व्हीकल टू showcase this cause of Hunger Free Bharat and bring these talented people and the hospitality industry under one wing and use cricket to combine together to get this vehicle going. So I think rules and all, just to make it entertaining, because it's a televised thing, people want to see sport. Nobody wants to see a one-sided encounter. So sports का क्या है? So sports एक ऐसी चीज है, the best reality show दुनिया का जो है ना वो स्पोर्ट्स है, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये नहीं पता क्या होने वाला। तो जब तक वो इंटरेस्ट एलिमेंट ना हो, अब वो इंटरेस्ट एलिमेंट क्या, क्योंकि इग्नोर कर रहे हैं, अब वहाँ पे बीसीसीआई के रूल आएंगे तो फिर तो आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा उसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रूल्स बनाए गए हैं वो स्टेडियम के हिसाब से, हमारी कोर कॉम्पिटेंस जो है जो खेल रहे हैं उनके हिसाब से और इंटरेस्टिंग बनाने के हिसाब से। तो वो जब आप आएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, इट इज ट्वीट अकॉर्डिंग टू द वेन्यू, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उसका मतलब क्रिकेट ही खेली जाएगी पर इन सच होलिस्टिक मैनर कि उसका एज भी रहे, कंपटीशन भी हो और जिस चीज के लिए हम एकजुट हुए उसका मैसेज भी जाए। एंटरटेनमेंट अब देखिए, अगर आपको बोलता कि हंगर फ्री भारत है और सारे शेफ्स आ जाएं तो मजा नहीं था। तो वी आर यूजिंग दैट बिकॉज आजकल क्या है कि अगर स्पोर्ट्स के को लेके अगर कोई कॉज आगे जाता है तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन, क्योंकि वी वांट इंडिया टू बिकम स्पोर्टिंग आल्सो। रूडी जी कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे आज कल के टाइम में दिस डे एंड एज आई डोंट फील एंड आई डोंट बिलीव एंड आई होप नॉट दैट एनीबॉडी इन इंडिया गोज टू बेड विद एन एम्प्टी स्टमक। बहुत मुश्किल बात है जो हुआ पिछले 5-6 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ये इम्पोर्टेंट आपकी सर रूडी सर थोड़ा सा देखने तो जल्दी से हमको भी ज्वाइन करो, आरसीआर को भी ज्वाइन करो और बेस को भी फॉलो करो, ठीक है?